Well, we are starting off with waves today, and write this down quickly. Wave is a disturbance. Wave is a disturbance. Disturbance which is moving from one position to other. Wave is just a disturbance which is moving from one position to other. Okay? So there has to be two very important conditions. One, there has to be a disturbance, and there has to be a mode in which the disturbance can be transferred from one point to another. So only disturbance একটা জায়গায় হলে সেটাকে আমরা wave বলবো না. Only when it gets transferred to a different point, we call it a wave. जैसे best example হচ্ছে stagnant water. You take up a stone and drop it. It creates ripples, और वो ripples एक जगह में नहीं रहता है. Gradually वो spread out करता है in all directions, right? So that is a very good example of wave. Alright? जब स्कूल में प्रेयर होता है, सब लोग एक लाइन में खड़े होते हैं, कोई पीछे से धक्का मारता है, तो सब एक के ऊपर एक गिरता है. That is also a wave. एक साथ सब लोग नहीं गिरता है, पहले एक गिरता है, फिर दूसरा गिरता है. Just like a dominoes, right? Right, you are. Dominoes. Dominoes কি হয়? অনেকগুলো একটার পর একটা অরেঞ্জ থাকে. So if you disturb one of them, it gradually disturbs the other one. ऐसे disturbance move करके चला जाता है, लेकिन वो जो object है वो सिर्फ वहां पर गिर के रह जाता है. So the object itself does not carry the wave from one point to another, but the wave gets transmitted taking the help of the next object and so on. Is that clear? So we'll be studying only a specific type of wave, that is sinusoidal waves. क्यों? क्योंकि in nature there are huge number of waves that's always going on all the time. ठीक है? जैसे sound wave, कोई कार horn blow करके चला गया, जैसे air का waves, जैसे समुद्र में या river में जो water का waves है. So all these are disturbances all the time going on everywhere. None of them are ideal. All are real waves, जिसका कोई proper shape, कोई proper orientation हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. ठीक है? So what we'll be doing today is an ideal wave, and we call it sinusoidal wave. Why sinusoidal wave? Because it obeys the sine function. Sine function টা obey করে, সেটাকে আমরা sinusoidal wave বলি. ঠিক আছে? And we draw the wave like this. Draw the wave like this, right? And we have already studied this is sine graph, right? Sine function gives us a graph like this. So this is an ideal wave, an ideal situation. And obviously we need to study the ideal things first, and then we need to go for variations, right? Before we start off with waves, we need to know the types of waves and few definitions related to waves. ये पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, otherwise हम लोग waves को analyze नहीं कर पाएंगे. जैसे हम लोग SHM में भी डेफिनेशन सीखे थे, उसके बाद उसको एनालाइज किए थे, वैसे वेव्स में भी हम लोगों को डेफिनेशन सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग एनालाइज कर पाएंगे. ठीक है? फर्स्ट, द टाइप ऑफ वेव्स. जनरली हम लोग दो वे से क्लासिफाई करते हैं वेव्स. राइट दिस डाउन. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ मीडियम, according to the requirement of medium, according to the requirement of medium, waves are classified into two types. Mechanical waves and electromagnetic waves. Magnetic waves. Mechanical waves क्या है? Requires material medium. Requires material medium. Requires material medium. Example?
साउंड वेव, हाँ क्यू, या जो हम लोग वाटर में रिपल्स देखते हैं, ऑल दोज आर मैकेनिकल वेव्स. हाँ राइट. So all these are mechanical waves. Best example, sound is a mechanical wave. Without material medium, sound cannot propagate. You all know this? Next type है electromagnetic waves. Does not require a material medium. Does not require material medium. Example? Light waves. Example? Light waves. So electromagnetic waves travel कैसे करता है? With the help of field. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का हेल्प से वो ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह. So it does not require any material medium. Alright? Alright. There is another way of classifying waves. According to the disturbing vibrations, means the vibrations that are carrying out the wave, they vibrate along any particular direction. If the vibrations are taking place along the direction of motion, like a dominoes, when you push one of the card, it overlaps on another card, then that card overlaps on the next card. So the vibration are taking place along the direction of a wave. That is a longitudinal wave. We call it longitudinal wave. But the ripples on the water, when you drop a stone, the waves spread out horizontally. But the vibration of the water level goes up and down, up and down, and up and down. Right? So that is called a transverse wave. Okay, write this down. According to the direction of vibrations, according to the direction of vibrations, according to the direction of vibrations, waves are of two types. Waves are of two types. Longitudinal wave. Longitudinal wave, where the particles vibrate along the direction of motion of wave. Particles vibrate along the direction of motion of wave. Direction of motion of wave. Again, a very good example is sound. Sound is a longitudinal wave. We'll know later on why sound is a longitudinal wave. Many of you might know it, but many of you might have forgotten. You have done sound in junior classes. You have heard about them as compressions or rarefactions. अच्छा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है? हाँ? 9. वो भी क्या टाइम है? अच्छा. के दीदी. So क्या लिखे हम लोग? Sound wave is an example of longitudinal wave, right? So the next one is transverse wave. Transverse wave में क्या होता है? Transverse wave, where the vibrations take place normal to the propagation of direction of propagation of wave. Normal to the direction of propagation of wave. You know what is meant by normal? Perpendicular, right? Perpendicular to the direction of propagation of wave. Propagation of wave. Okay? So you can take the example of ripples on the water surface. It's a very good example of transverse wave जो तुम लोग देख सकते हो. लेकिन light is also a transverse wave. हम लोग देख नहीं पाते इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आता है. But वो जो हम लोग देख पाते हैं everyday life में, any radiation is a transverse wave. And everyday example जो हम लोग देखते हैं that is ripples on the surface of water.
या ओशन में जो वेव होता है, so that is also a transverse wave, that's not a longitudinal wave. clear? types clear? अब कुछ डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशंस. फर्स्ट इज वेवलेंथ. क्यों? इसको छोड़ के जो बाकी डेफिनेशंस हैं हम लोग ऑसिलेशंस में कर चुके हैं, तो रिपीट करेंगे, लेकिन पहले हम लोग वेवलेंथ क्या होता है पहले समझ लेंगे. व्हाट इज अ वेवलेंथ? दो जगह का बीच का डिस्टेंस. कौन सा दो जगह का? जो ऊपर का क्रेस्ट यहाँ से यहाँ तक ऐसा पूरा यहाँ से यहाँ तक तो पूरा सो जहां से एक रिपीटेशन स्टार्ट होगा वहां तक, नियरेस्ट पॉइंट जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होगा, मतलब क्रेस्ट से तुम क्रेस्ट तक लो, दिस इज वन वेवलेंथ, राइट? सो यहां से यहां तक लो, ये भी एक वेवलेंथ होगा. Why? Because इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट्स. So the point after which the repetition starts, वहां तक you can say is a wavelength. As if we are breaking the whole continuous thing up into one part, one block. So wavelength is like a single wave. Is that clear? हो जाएगा ऐसे? And it is denoted by the letter lambda. Lambda से हम लोग denote करते हैं wavelength को. Alright? अच्छा. Since we are dealing with what type of waves? Sinusoidal waves. कोई भी तरीके का वेव हम लोग डील कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है, सारा वेव हम लोग विजुअलाइज करते हैं एज अ साइनोसॉइडल वेव. नाउ व्हाट इज अ साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव? इसका मतलब क्या है? अच्छा पहले लिख लेते हैं. राइट दिस डाउन. हम बोल रहे हैं, राइट दिस डाउन. और आगे वेवलेंथ लिखते हो. अच्छा ठीक है, आगे ताले डेफिनेशन को शेष करनी ताकि साइनसॉइडल वेव ढूंढो. राइट दिस डाउन. वेवलेंथ इज, व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और consecutive troughs. तो वो क्रेस्ट किसे बोला जाता है? ये हिल टॉप्स को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं. हिल टॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं. और जो वैलीज होता है उन लोगों को हम लोग ट्रफ बोलते हैं. ये या इसमें और नहीं बनाया है. सो ये ट्रफ्स है. these are troughs. these are troughs and these are crests. अच्छा कैन यू टेल मी, ये ऊपर वाला वेव और नीचे वाला वेव में डिफरेंस क्या है? हाँ, इसका वेवलेंथ बड़ा है और इसका वेवलेंथ, मतलब ये कम जगह में ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स आ रहा है. राइट राइट, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड. लेकिन वेव्स में हम लोग फ्रीक्वेंसी थोड़ा डिफरेंटली डिफाइन करते हैं. कैसे? फ्रीक्वेंसी, राइट दिस डाउन. Frequency is the number of waves that is IE, that is number of crests or troughs, passing through any point in 1 second. Passing through any point in 1 second. So क्या वो जो SHM वाला फ्रीक्वेंसी था वो अलग होगा? ये अलग है? नहीं, they are same. Just the visualization is different. Frequency is number of oscillations per second. और जितना बार सोर्स ऑसिलेट करेगा उतना ही ना वेव्स निकलेगा उसमें से. So अगर ये 20 बार ऑसिलेट कर लेता है तो वो 20 तो वेव्स जनरेट करेगा इन, तो मतलब कोई भी एक पॉइंट में से 20 तो क्रेस्ट पास करेगा या 20 तो ट्रफ पास करेगा इन. समझना? फ्रीक्वेंसी क्लियर? टाइम पीरियड क्या होगा? ऑलवेज. किंतु डेफिनेशन টা কি হবে এখানে? नंबर ऑफ
टाइम टेकन बाय वन वेव टू क्रॉस अ पॉइंट, ठीक है। सो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन by the wave to cross a distance or to travel a distance, cross नहीं तो लिखो, to travel a distance equal to its wavelength, travel a distance equal to its wavelength। तो इसी डेफिनेशन के हिसाब से वेव वेलोसिटी क्या होना चाहिए बोलो तो? रेट ऑफ टाइम। वेव वेलोसिटी क्या होना चाहिए? दिस बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम्स, ठीक है। लिख लो, एक बार लिख लो। वेव वेलोसिटी इज द distance traveled by wave per unit time. Wave velocity is the distance traveled by a wave per unit time. Clear? Yes, you can say that. देखो अभी टाइम पीरियड का डेफिनेशन हम लोग क्या बोले? विवन का टाइम पीरियड डेफिनेशन की so the time it takes to travel a distance equal to its wavelength, so this is the wavelength lambda, and say the time period is t. How will you define wave velocity? Lambda by t, distance traveled by time taken, है ना? Generally हमने speed बोली, so you can call it wave speed, doesn't matter, ठीक है। So wave velocity या wave speed क्या होता है? Wavelength by time period, ठीक है। So you can write v is equal to lambda by t, and you all know that time period is 1 by frequency, so 1 by t को हम लोग f लिख सकते हैं क्या? So v क्या हो जाएगा? Right, f lambda. So the relation between velocity, time period and wavelength, or velocity, frequency and wavelength is always this. This is true for any wave. যে কোনো ওয়েভের জন্য এটা true. For any type of wave. Is that clear? The relation between wave velocity, frequency and wavelength, या wave velocity, wavelength and time period. ठीक है? So we have done almost all the definitions. एक बच गया। Amplitude क्या होता है? वो तो सेम है, जो SHM में था वही है। Maximum displacement from the mean position। मतलब ये mean position है, इससे ये crest का height या trough का depth, ठीक है? Crest का height या trough का depth। ये amplitude है, ये भी amplitude है, ठीक है? So write this down. Amplitude is the maximum displacement from the mean position. Amplitude is the maximum displacement from the mean position. Is that clear? बुझा सेटा? Well, so we are done with all the definitions and everything you needed to know. सब हो गया। अब मुझे वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए। कुछ भी मांग लेते हैं, ऐसा चलेगा? वेव क्या है वही समझ में नहीं आया, बोल रहे इसकी इक्वेशन बनाएंगे, मतलब क्या है आपका? अच्छा मुझे एक चीज बताओ तो, एक वेव में कितना ठो पार्टिकल होता है? एक वेव जाएगा ना, तो कितना ठो पार्टिकल है उसमें? ऑब्वियसली इनफाइनाइट। हम लोगों को पता ही नहीं है, राइट? क्या हाँ या ना? तो एक पार्टिकल से सिर्फ वेव बना दिए। एक पार्टिकल होगा तो वो सिर्फ ऑसिलेट ही करेगा, ठीक है? अगर वो अपना ऑसिलेशंस किसी दूसरे को ट्रांसफर कर ही नहीं पाता है तो वेव बन ही नहीं पाएगा।
ओ अच्छा, ये पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। हाँ, ये थोड़ा हम लोग बाद में करेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं कि वेव जो है वो ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस है व्हिच इज प्रोसीडिंग टू पास। कैसे करता है, हाउ डज इट पास? माने फॉर लॉन्गिट्यूडिनल वेव आई अंडरस्टैंड वेरी वेल कि एक दूसरे को धक्का देगा, वो दूसरे को धक्का देगा, वो दूसरे को धक्का देगा, तो ऐसे द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जो प्रेयर लाइन में होता है। ठीक है, पीछे से कोई धक्का दिया, उसके पीछे कोई धक्का दिया, उसके पीछे जोर जबरदस्ती धक्का दे दिया, सो गया उसके ऊपर। ठीक है, तो वो होता था बचपन में, वो सही है, वही उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ट्रांसवर्स वेव कैसे प्रोपेगेट करता है? हाँ, उसमें बोल रहे हैं ना कि वाइब्रेशन और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो मतलब सामने जाके तो धक्का नहीं दे सकते, वो जहां पर ही है वहां पर ही ऊपर नीचे जाके वाइब्रेट कर रहा है, राइट राइट। तो वो प्लेस किया उतना ही वो उठा लेगा। हाँ, तो वो मान लो वाटर का एक छोटा सा जगह में तुम स्टोन ड्रॉप किए, तो वो वहीं पर ऊपर नीचे होगा, वो वेव क्यों क्रिएट करेगा? क्योंकि सर वाटर का तो प्रेशर सब जगह इक्वल रहता है। ट्रांसवर्स वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अलग बात है, उसका बाद डिस्कस हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग मैकेनिकल वेव के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो देख सकते हैं एवरीडे लाइफ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ी ना देख पाते हैं हम लोग, तो वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फॉर द टाइमिंग जो देख सकते हैं उसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कैसे होगा। कैसे एक मान लो जहां पर जाके गिरा सिर्फ वही वाला पार्ट का जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे बस, तो वो स्प्रेड क्यों करेगा? सब कनेक्टेड है ना। कैसे कनेक्टेड है हम लोगों को तो मालूम है ना, लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है ना। क्या बोल रहे थे? सरफेस टेंशन। Surface tension pulls all the molecule together near the surface. You know this property? कि surface liquid का जो surface होता है वहां पर सारा molecules बहुत closely packed होता है, बहुत जोर से एक दूसरे को pull करता है and they are closely packed. So what happens? The molecules only at the surface of liquid, not within the body of the liquid. Only at the surface of the liquid, when one molecule starts oscillating, it creates a shear force on the next molecule. Remember what is the shear force? घिसता है एक दूसरे से, घिसने वाला जो फोर्स है that is called shear force. तो ट्रांसवर्स वेव सिर्फ वो मीडियम में से पास कर सकता है जिसमें जो पार्टिकल्स है, मीडियम पार्टिकल्स, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। अगर कांटेक्ट में नहीं होगा तो ट्रांसवर्स वेव पास नहीं कर सकता है। सो ट्रांसवर्स वेव जो है वो सिर्फ सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड में से पास करता है, ना तो वो बॉडी ऑफ लिक्विड में से पास कर सकता है, ना तो वो गैसेस में से पास कर सकता है। गैसेस में ट्रांसवर्स वेव पास नहीं करता है, और लिक्विड का बॉडी मतलब लिक्विड के अंदर ट्रांसवर्स वेव नहीं जाता है, सिर्फ उसका सरफेस पे होता है। बोला इसको बोलना, इज दैट क्लियर? So write this down. Longitudinal wave can travel through all mediums. Longitudinal waves can travel through all medium, through all medium, solid, liquids and gases. Through all medium, solid, liquids and gases. But transverse waves can pass through solid and surface of liquids. But not through gases and the body of liquids. Not through gases and the body of liquids. और एक चीज भी लिख दो, ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट्स with the help of shear forces. Sir, not through gases at the bottom of Liquids. Transverse wave propagates with the help of shear forces. याद है ना shear force क्या होता है? इलास्टिसिटी में पढ़े थे कि जो कोई सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करता है वो shear force.
तो कोई भी घिसने वाला फोर्स है ना, वो shear force ही होता है all the time. Done? Now give the ID. Equation of wave. Right. Equation of plane progressive sinusoidal wave. सर ये क्या बोल रहे सर, सिर्फ sinusoidal बोल रहे थे, ये सब क्या हो रहा है? ওই ইকুয়েশন অফ ওয়েভের মধ্যে মানে ওয়েভের জায়গায় আমি প্লেন প্রোগ্রেসিভ সাইনোসয়েডাল ওয়েভ লিখলাম, বিকজ আমরা প্লেন প্রোগ্রেসিভ সাইনোসয়েডাল ওয়েভই করব। আচ্ছা, ফার্স্ট লেট মি এক্সপ্লেন ইউ অল দ্য টার্মস। প্লেন, প্লেন মানে ইটস আ টু ডাইমেনশনাল, থ্রি ডাইমেনশনাল না, মানে ইফ আই ড্র ইট অন দ্য বোর্ড it will be like this. ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটা আমরা একটা আলাদা জায়গায় করি।